Hi everybody, I'm Professor Sandeep Gupta from Engineering Minds, and in this particular video we'll talk about different engineering streams or different engineering branches. But before we continue with the video, let me make you aware of one thing. I hope you have already attended our seminar on engineering admissions process. Now, if you have not attended that particular seminar, I suggest that you send me a message over WhatsApp on the phone number which is given on the bottom right of the screen. That seminar is very helpful to you all, and it is an eye-opener on the entire engineering admissions process. Not only that, I hope you are already a part of our WhatsApp group. Once again, if you are not a part of our WhatsApp group, send me a WhatsApp message on the same number. In this particular WhatsApp group, we'll be giving you regular updates about the engineering admissions process. So I suggest that you should be a part of this group till your college admissions are done. Alright. Now, without wasting any time, let's continue with this particular video. So, looking at this particular image, what do you think is the first branch of engineering which we are going to discuss? That's right, many of you have guessed it correctly. So the first branch is the civil engineering, which is the oldest branch of engineering. Now let's first understand what exactly is civil engineering. So, putting it in a definition, we would say civil engineering is that branch in which we deal with the design, construction, and maintenance of various structures. Now, when we say various structures, we mean buildings, roads, bridges, canals, dams, and so on. Now, which all colleges are there in Mumbai which offer you civil engineering? So in Mumbai, there are many colleges which offer you civil engineering, the best ones being VJTI and SPC. But apart from that, there are many private colleges like Thakur, Vartak, Sabu Siddiq, and so on, where you can do civil engineering. The next thing is, what kind of placement can you expect after doing civil engineering? So after doing your BE or BTech in civil engineering, many students would go for masters in US or in India. So if you go for masters in US, it would be called MS, and in India, it would be called ME or MTech. But if you don't go for masters, if you're taking up placements, then you can expect placements in private construction companies like Shapoorji Pallonji, L&T Construction, or in some government organizations like Maharashtra Metro Rail Corporation, BMC, and so on. But just keep one thing in mind, that is government organizations normally come only in VJTI for the purpose of placements. So this was about civil engineering. Now one question which you may have in your mind is that what kind of salary you can expect after doing BE or BTech in civil engineering. So we'll discuss about the salary and all after I finish up talking about all the branches of engineering. Only then in the end we'll do a kind of comparison. So for as of now, let's move to the next branch of engineering. Yeah, and one more thing. If you're finding my speed of video faster or slower, then please make the adjustments accordingly in the YouTube. Okay, I hope you know that in YouTube and in all the media players, there are adjustments where you can increase or decrease the speed of the video. So please do that if you're finding the speed faster or slower. Now let's move on to the next branch of engineering. The next branch of engineering is the mechanical engineering. Now first let's understand what exactly it is. So mechanical engineering is that branch of engineering which deals with the design, analysis and manufacture of mechanical systems. Now I'm sure many of you don't understand this particular statement, so let's understand in greater detail. So when we say mechanical systems, we mean engines, power plants. So mechanical engineering में क्या होता है कि we study about the designing and development of the engines. Now when we say engines, those engines could be used in motorbikes, they could be used in four-wheelers, they could be used in aeroplanes, any engine basically. Then in mechanical engineering, we study about the heavy machinery which is being used in the power plants. We study about robotics, we study about manufacturing of vehicles, we study about those heavy industrial equipments which are used in the manufacturing of other goods, other items. And finally, mechanical engineering, we study about HVAC,
Now HVAC का मतलब क्या होता है? It means heating, ventilation and air conditioning systems. So I'm sure you all are aware of what an air conditioner is. Apart from that, I'm also sure that you will be aware that in cold countries, they have heaters in order to maintain the heat inside the home. So, ये जो heaters होते हैं, air conditioners होते हैं, इनकी working कैसी होती है, manufacturing कैसे होता है, this also is being studied in mechanical engineering. So, putting it in small simple words, mechanical engineering में हम वो सब चीजें सीखते हैं जो heavy machinery से related है. Now, let's talk about some specialization of mechanical engineering. That means BE करने के बाद, okay, we can do specialization in which fields after doing mechanical engineering. So after BE, you can do a specialization in aerospace engineering or aeronautical engineering, or you can go for automobile engineering and others like robotics, HVAC, and machines for manufacturing sector. Okay. By the way, there are some colleges which offer automobile engineering separately. But as of now, these are the specializations which you can do after doing BE. Now, having understood this, let's talk about the colleges which offer mechanical engineering in Mumbai. So in Mumbai, colleges like VJTI, SPC, DJ Sangvi, Father Admiral Bandra, Father Admiral Vashi, Francis, Thakur, these are colleges, some of the colleges which offer mechanical engineering. Of late, the seats of mechanical engineering are not filled that fast. So even if you have a decent score, you can expect to get mechanical engineering in one of the top 5-6 colleges of Mumbai quite easily. Now, there are two colleges like Sabu Siddiq, which is in Mumbai Central, and four colleges: Sabu Siddiq, Pillai, Saraswati and Theme. So Sabu Siddiq is in Mumbai Central, Pillai is in Panvel, Saraswati is in Kharghar. So these colleges also offer automobile engineering. So if you are specifically interested in the automobile sector, then you can think about doing this particular engineering. Although at the end of this particular section, I will tell you something about automobile once again. Now, what kind of placements can you expect after doing mechanical engineering? So, mechanical engineering करने के बाद, you can expect placements in all those companies which deal with heavy machinery. जैसे Tata Motors हुआ, TVS Motors हुआ, Godrej हुआ, Blue Star, L&T, Voltas, Tata Power, Siemens, and so on. So these are those companies which even come for placements in good colleges like VJTI, SPC, DJ Sangvi, and others. Alright. Now, many students ask me that should we go for mechanical engineering or automobile engineering? They tell me that, sir, हमको तो automobile में ज़्यादा interest है. So should we do automobile directly instead of doing mechanical engineering? So my advice would be, don't do that. Instead of directly going for automobile engineering, what you do is you take your 4 years of degree in mechanical, and afterwards when you are doing ME or MTech or MS, you super specialize in automobile engineering. So that is a better way over here. So this was all about mechanical engineering. Now let's start with the next branch of engineering. So looking at this particular gentleman, आपने समझ ही लिया होगा that the next branch of engineering is electrical engineering. Now what exactly is electrical engineering? So electrical engineering deals with the study and application of electricity, electronics and electromagnetism. अब इसका क्या मतलब होता है, तो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं. So electrical engineering में आप electrical circuits के बारे में सीखेंगे. So when I say electrical circuits, I mean resistors, capacitors, inductors, and so on. So we'll be studying about the designing of these electrical circuits, which in turn are used in various electrical devices. Then you'll be studying about power systems. Okay, अब power system से मेरा मतलब क्या है? So power system से मतलब है you'll be studying about how electricity is generated and then how this electricity is distributed. So the generation of electricity and the distribution of electricity, this is basically called power system, about which you will be studying in great detail in electrical engineering. Then you will be studying about control systems.
Now control systems क्या होते हैं? So control systems are basically those equipments, those systems, those machines which are used to control something else in an industry, in a particular company, in a particular factory. So we'll understand more about control systems when we talk about instrumentation engineering. For time being इतना समझिए, control systems are those systems जो दूसरी चीजों को कंट्रोल करने में काम आते हैं. And of course, in electrical engineering, you will be also studying a bit about analog and digital electronics. Now, some of you must be wondering, why will we study electronics in electrical engineering? So let me tell you one thing, that in many universities, I repeat, in many universities, there is no separate branch of electronics engineering. हमारे मुंबई यूनिवर्सिटी में क्या होता है, या हमारे मुंबई में महाराष्ट्र में क्या होता है कि there is a separate branch for electrical engineering and there is a separate branch for electronics engineering. But outside Mumbai, outside Maharashtra, in many other universities, there is no branch of electronics engineering, and electronics engineering is actually a part of electrical engineering. In fact, even abroad, in countries like US and all, there is nothing called electronics engineering. They are taught electronics as a part of electrical engineering, which is kind of correct. So here in Mumbai, in Maharashtra, what we do is we have a separate branch of electronics engineering where we deal with electronics in greater detail. But electrical engineering, maybe you are exposed to the concept of analog and digital electronics. अब analog electronics किसे कहते हैं? तो quickly, where we deal with oscillators, amplifiers, filters, तो वो analog electronics हो गया. And digital electronics में आता है flip-flop, gates and transistors and all those things. Okay. Now, which all colleges offer electrical engineering in Mumbai? So in Mumbai, there are very few colleges which offer electrical engineering, and they are the ones which you see on the screen over here. So the best among them being BJTI, SPC, Father Agnel Vashi, Francis, and so on. Francis is in Borivali. And the Father Agnel which you see over here is the Vashi Father Agnel, which offers you electrical engineering. As far as placements is concerned, so electrical engineering students find placements in all those companies in which mechanical engineering students are placed. Basically क्या होता है ना, जहाँ mechanical engineering की जरूरत होती है, वहाँ electrical engineers की भी जरूरत होती है, and vice versa. क्योंकि अगर आपके पास कोई heavy machinery है, तो उसके लिए सिर्फ मैकेनिकल नहीं, आपको एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की भी जरूरत पड़ेगी. अब इधर ओवर हियर आई एम टॉकिंग अबाउट अ कोर प्लेसमेंट फील्ड्स. ओके, कोर से मेरा मतलब है वो कंपनीज जो इलेक्ट्रिकल का ही काम करती हैं या मैकेनिकल का भी काम करती हैं. एज ऑफ नाउ आजकल क्या होता है ना कि 90% ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स गेट प्लेस्ड इन सॉफ्टवेयर कंपनीज. सो उसके बारे में मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं. राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कोर फील्ड्स वेयर सिविल और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स आर प्लेस्ड. सो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. Now let's understand the next branch of engineering, which is the electronics engineering. Now what exactly it is? So as I told you a few minutes back that electronics engineering is a subfield of electrical engineering. यानी जो इलेक्ट्रॉनिक्स का फील्ड है ये इलेक्ट्रिकल से ही आया है. बट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में मेजर डिफरेंस क्या है? द मेजर डिफरेंस इज दैट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आई रिपीट, इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग we deal with high power devices, whereas in electronics engineering we deal with low power devices. तो high power device मतलब समझो, take example of a fan जिसको approximately 80 watts to 100 watts लगता है, whereas a low power device is something like a phone charger or a phone in itself जिसको for example 5 watts लगता है. तो ऐसे जो low power devices होते हैं वो हम डील करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में. सो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हम क्या पढ़ते हैं? हम ये पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को कैसे डिजाइन किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कैसे बनाया जाता है. इन शॉर्ट वी बेसिकली स्टडी अबाउट द यूजेज ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ट्रांजिस्टर्स एंड इंटीग्रेटेड सर्किट्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड हाउ दे आर पुट टू यूज इन द रियल वर्ल्ड. नाउ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर कहाँ काम करता है, उसको प्लेसमेंट कहाँ मिलती है? So an electronics engineer can work in sectors which manufacture electronic devices. So electronic devices like television, mobile phones,
कंप्यूटर्स, प्रोसेसर्स, ये सभी चीजें जहां मैन्युफैक्चर होती हैं वहां एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर काम कर सकता है। बट लेट मी टेल यू वन रियलिटी अबाउट इट इन इंडिया। Now the problem is that in India there are very few, I repeat very few core jobs of electronics engineering. प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स इतना मैन्युफैक्चर नहीं होता है। ओके, इंडिया में जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स आते हैं या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आते हैं वो जनरली बाहर से इंपोर्ट होते हैं, ताइवान से, चाइना से। सो द प्रॉब्लम इज कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करने के बाद इंडिया में आपको कोर जॉब मिलने की संभावना बहुत कम है, वेरी वेरी लेस। ओके, सो देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हिच आर कॉलेजेस ऑफर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। Now, because there are very few jobs of core electronics, और जब भी मैं बार बार core बोल रहा हूँ, CORE, core, so core से मेरा मतलब है कि उस फील्ड से रिलेटेड। ओके, अब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करने के बाद you will definitely get a job in a, you can get a job in a software company, बट उसको हम core job नहीं बोलेंगे। core से मेरा मतलब है कि उसको मैं core job क्यों नहीं बोलूंगा, क्योंकि जब आपने इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई की तब एक्चुअली आपने सॉफ्टवेयर की पढ़ाई नहीं की है, आपने सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई की। बट उसके बाद अगर आपने सॉफ्टवेयर में स्विच किया तो वो आपका कोर जॉब नहीं है। ओके, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, नाउ बिकॉज़ देयर आर वेरी फ्यू कोर जॉब्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इन इंडिया, इसीलिए देयर आर वेरी फ्यू कॉलेजेस व्हिच ऑफर प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स। सो इन मुंबई देयर आर ओनली 5 कॉलेजेस। दे आर बीजेटीआई, वेसिट मतलब Vivekanand College in Chembur, very good college. Then Vidyalankar, Dattamike and Terna. So these are the only colleges which offer electronics engineering, pure electronics engineering. As far as placement is concerned, so I have already told you that in India, the core placements for electronics engineering is almost none. यानी इंडिया में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से रिलेटेड जो जॉब है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, आपको नहीं मिलेगा। ऑल्दो यू कैन गेट प्लेसमेंट्स इन रिलेटेड सेक्टर्स। अब रिलेटेड सेक्टर से मेरा मतलब क्या है, तो आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स। ओके, नाउ लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अ कंपनी लाइक सीमेंस। तो सीमेंस एक ऐसी कंपनी है जो मेडिकल इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करती है, ऑफ कोर्स इंडिया में नहीं, अब्रॉड। ओके, so these medical equipments are used in hospitals. Okay, they are used in diagnostic centers, जैसे CT scan की मशीन हुई, MRI की मशीन हुई, and so on. So these machines are manufactured obviously abroad. Okay, but they need people to market these machines over here. Okay, उनको ऐसे लोग चाहिए जो डॉक्टर्स के पास जाएं, ये मशीन का एप्लीकेशन उनको समझाएं, एंड उनको ये समझाएं कि कैसे हमारी मशीन दूसरों की मशीन से सुपीरियर है। So what these companies do is they ideally employ electronics engineer in their marketing team, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर होगा उसको उस मशीन की टेक्निकलिटीज भी अच्छे से समझेगी और वो उस टेक्निकलिटीज को सामने वाले को भी अच्छे से समझा पाएगा। एंड दैट इज व्हाई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स find placement in such companies. One more example is telecom companies like Jio, Airtel, Vodafone and so on. Now these telecom companies once again अपनी जो मशीनरी है वो तो लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं, बट वो मशीनरी को यहाँ इंस्टॉल करना, उसको मेंटेन करना, ओके, छोटे मोटा उसमें रिपेयर्स करना, उसके लिए अगेन दे नीड इंजीनियर्स, एंड हु बेटर देन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स. So if you are doing electronics, okay, then if you have that love for electronics, then I would also suggest that you do masters in electronics from abroad, okay, and try to find a core job in electronics. Okay, so that was all about electronics engineering. Now looking at this guy, what do you think is the next engineering? So you guessed it right. We are going to talk about the electronics and telecommunication engineering, जिसे in short बोलते हैं EXTC. दूसरे यूनिवर्सिटीज में इस इंजीनियरिंग को बुलाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग. But in Mumbai, in Maharashtra, it is called telecommunication engineering. Anyway, let's understand that what exactly it is. So, in EXTC, basically we need to understand that it is a subfield of electronics engineering. Subfield से मेरा मतलब ये है कि EXTC में क्या होगा कि जो पहले के जो 2 साल होंगे, the first 2 years of EXTC, it will be common with normal electronics engineering.
And in the last 2 years, you will be mainly studying about the design and development of communication systems. Now, when we say communication systems, तो इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है वो सिस्टम्स जिससे टेलीविजन की ब्रॉडकास्टिंग होती है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स, मोबाइल नेटवर्क्स एंड सो ऑन. सो फॉर एग्जाम्पल जो हमारा पुराना टाटा स्काई था, पुराना मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल तो सब कुछ OTT पे आ गया है, but let's talk about the olden days where we used to have this cable, okay, जहाँ अपने पास टाटा स्काई था, okay, डिश एंटीना थी. तो जो टाटा स्काई का जो मैकेनिज्म था, वो जो डिश एंटीना का जो मैकेनिज्म था, उसको बोलते हैं टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम. तो वो टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग कैसे होता है, वो एक EXTC इंजीनियर सीखता है, ओके. Then apart from that, there is something called satellite communication system, जहाँ कम्युनिकेशन होता है with the help of a satellite. Okay. Apart from that, you are aware of the mobile networks. तो हमारे पूरे सिटी में जगह पे मोबाइल टावर्स हैं, and with the help of those mobile towers, we communicate with each other. तो ये जितने भी कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, ये एक टेलीकॉम इंजीनियर सीखता है in great detail, especially in the last 2 years of the engineering. अब EXTC के बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जैसे VJTI हुआ, SPIT हुआ, एंड ये SPIT है, नॉट SPCE, ओके. So SPIT and SPCE are two different colleges in the same campus. We have spoken about it in our seminars also. Apart from that, EXTC can be done at DJ Sangvi, Father Agnel, Vivekanand, and so on. Now, where EXTC engineers find the placement? So I have spoken about it hardly a few minutes back when I was talking to you about the placements of electronics engineers. तो जो EXTC engineers होते हैं, इनको placements normally telecom companies में मिलता है for the maintenance, okay, for the installation and for some minor repair of the equipments which these telecom companies use. So this was all about the EXTC, Electronics and Telecommunication, जिसे दूसरे यूनिवर्सिटीज में बोलते हैं Electronics and Communication Engineering. Now let's understand the next stream of engineering, and that is the Biomedical Engineering. In short, इसको biome बोलते हैं. Now what exactly it is? So just like instrumentation engineering, biomedical engineering is also a subfield of electronics engineering. So biomedical engineers जो first जो 2 साल होते हैं उसमें तो लोग electronics के ही core concept सीखते हैं, and in the remaining 2 years they study the design and development of medical equipment and softwares which are used for the purpose of diagnostics and monitoring. अब इसका क्या मतलब है? तो पहले monitoring की बात करते हैं. आई एम श्योर आपने मूवीज में देखा रहेगा या एक्चुअली हॉस्पिटल्स में देखा रहेगा कि जो पेशेंट होता है उसके सर पे या चेस्ट पे काफी कुछ लगाया जाता है, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट वो पेशेंट की हार्ट बीट, पेशेंट का हार्ट रेट, उसका ब्लड प्रेशर मॉनिटर किया जाता है, ओके. सिमिलरली डायग्नोस्टिक्स का क्या मतलब होता है? सो आई एम श्योर आपको पता होगा कि देयर आर मेनी सेंटर्स वेयर देयर आर मशीन्स फॉर टेकिंग एक्सरे, CT स्कैन, MRI स्कैन. तो ये जितने भी मशीन्स होते हैं, CT स्कैन, MRI स्कैन, एक्सरे, दे आर बेसिकली यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक्स एंड मॉनिटरिंग. का मतलब वो मशीन्स जो पेशेंट की हेल्थ मॉनिटर करने में काम आते हैं, जैसे उसका हार्ट रेट, BP एंड सो ऑन. तो ये जितने भी मशीन्स हैं, ओके, they come under this particular category of biomedical engineering. So basically biomedical engineers ये सीखते हैं कि इन मशीन्स को डेवलप कैसे किया जाता है, उनको एनहांस कैसे किया जाता है, एंड सो ऑन. Not only that, these days too much of research and work is done on the development of artificial organs and prosthetics. So I hope आपको पता होगा कि these days researchers are involved in developing artificial heart or kidney and so on. तो ये जो सारी चीजें हैं कि आर्टिफिशियल ऑर्गन्स के ऊपर रिसर्च, उसका डेवलपमेंट, प्रोस्थेटिक्स पे रिसर्च, उसका डेवलपमेंट, दिस आल्सो कम्स अंडर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग. नाउ इन मुंबई देयर आर ओनली टू कॉलेजेस which offer biomedical engineering, and these two are Vidyalankar and MGM. Okay, Vidyalankar is in Vadala, MGM is in Panvel.
नाउ एज फार एज प्लेसमेंट्स इज कंसर्न, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग करने के बाद एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है, ईएक्सीसी में भी है, कि बायोमेडिकल के कोर जॉब्स आपको इंडिया में ऑलमोस्ट नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे ये सीमेंस हुआ, जीई, जनरल इलेक्ट्रिक, फिलिप्स, मेट्रॉनिक, एबिट लैब्स, ओके, all these companies are situated abroad, okay, in US, in Germany, mainly these two countries, and others also. So these companies which manufacture biomedical equipments, they are mainly situated abroad, and जितने भी equipments होते हैं वहां से यहाँ import हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर आपको बायोमेडिकल में truly interest है, so once again I suggest कि आपको masters करना ही चाहिए, so that you can end up working in these companies in this particular field. एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, वही होता है जो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के वक्त कहा था कि ये जितनी भी कंपनीज होती हैं, सीमेंस, जी, फिलिप्स, what they do is they employ biomedical engineering in their sales and marketing team. Why? I have already told you the reason. क्योंकि अगर कोई बायोमेडिकल इंजीनियर होगा तो वो सामने वाले को और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा अबाउट द मशीन्स which his company has manufactured. So that is why these engineers in India, they are employed in the sales and marketing team. Okay, so that was biomedical engineering. Now let's talk about everybody's favorite branch, and that is the computer engineering. But apart from computer engineering, there are several other branches which are similar or almost same as computer engineering, and those are information technology, जिसको हम IT बोलते हैं, AIDS, which is artificial intelligence and data science, then AIML, which is artificial intelligence and machine learning, then cybersecurity, internet of things, and blockchain technology. So let's study about all these branches कि इनमें क्या होता है। So पहली बात ये कि in all these branches you will study about the design and development of computer hardware and computer software. So basically क्या होगा, इन ब्रांचेस में तुम ये सीखोगे कि कंप्यूटर हार्डवेयर ये कैसे वर्क करता है, इसका डिजाइनिंग कैसे होता है। बट द थिंग इज दैट इन दीज ब्रांचेस यू विल बी स्टडीइंग अबाउट कंप्यूटर हार्डवेयर ओनली थियोरेटिकली, ओके, नॉट एक्चुअली प्रैक्टिकली। तो एक जो कंप्यूटर इंजीनियर होता है, उसे कंप्यूटर हार्डवेयर की सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज होती है, प्रैक्टिकल ज्यादा नहीं। तो प्रैक्टिकल नॉलेज किसकी होती है? तो वो होती है सॉफ्टवेयर की, अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? तो सॉफ्टवेयर का मतलब है एनी प्रोग्राम। सो प्रोग्राम्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, इंस्टाग्राम का जो ऐप है आपके सेल फोन पे, टिकटॉक है, ओके, ऑल द एप्स, ऑल द प्रोग्राम्स व्हिच यू आर यूजिंग ऑन योर कंप्यूटर, ऑन योर सेल फोन, दे आर बेसिकली कॉल्ड सॉफ्टवेयर्स। तो इन सॉफ्टवेयर को डेवलप कैसे किया जाता है, ये ग्रेट डिटेल में हम पढ़ते हैं इन दीज पर्टिकुलर ब्रांचेस। So in these branches, you will be studying many programming languages like C, C++, Java, Python, JavaScript, Android programming, and so on. But apart from that, you'll be studying many important subjects like data structures, algorithm analysis. अब ये जो subject है, data structures, algorithm analysis, these are two very important subjects if you want to get placed in super dream companies, in elite companies, जिनका पैकेज होता है let's say 30 lakhs 40 lakhs per year. Okay, क्या होता है ना कि if you are into good college or a decent college, good भी नहीं, समझो average college, तो 99.99% आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा, ओके। बट आपको जो प्लेसमेंट मिलेगा मोस्टली वो एवरेज प्लेसमेंट होगा विद अ सैलरी ऑफ लेट्स से 40-50,000 per month. So if you want placement in super dream companies, elite companies, very good companies जिसका पैकेज 40 lakhs 50 lakhs per year होता है, so you need to be really good in your domain, and you need to be really good in this data structures, algorithm analysis, and so on. Apart from that, you'll be also studying about operating systems, Windows operating system, Android operating system. You'll be studying about database management system. तो database basically वो जगह है जहाँ डेटा को स्टोर किया जाता है, तो उसके बारे में हम सीखेंगे। Then we'll also study about artificial intelligence, data science, and machine learning. तो इन तीनों के बारे में थोड़ा डिटेल में मैं बताऊंगा आफ्टर सम टाइम। Now one very important thing which I want to tell you over here is that whether you do computer engineering,
or IT or AIDS or AIML or CS IoT BCT, all these streams are same. Okay, now when I say same, what exactly do I mean? What I mean is कि 4 साल के बाद, when I say same, I actually mean that for all practical purposes it is same. So 4 साल के बाद जब कोई कंपनी प्लेसमेंट के लिए आएगी तो वो ये नहीं बोलेगी कि आई विल टेक ओनली CS engineers, computer science engineers, I will not take IT, और I will take only IT, I will not take AIDS, ऐसा कोई नहीं बोलेगा. Okay, a company who comes for placements of computer engineers will also place all these others which are mentioned in front of you. So now you will have a question in your mind. You will have a question in your mind that if all these fields are same, तो फिर इतने सारे fields हैं क्यों? So this has something to do with some rules of AICTE, All India Council of Technical Education. Let's not go into those details right now. Okay? आप सिर्फ ये समझिए कि for all practical purposes these fields are same. But in spite of that क्या होता है ना? एक महीने बाद, 2 महीने बाद, again you will ask me, sir, are these fields really same? My answer will be yes, they are same. Again, after 3 months, you'll ask me, are they same? My answer will be yes, they are same. Yes, they are same. Okay. Now, why am I stressing so much on this point? Because हमें इस point का फायदा उठाना है. क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग इज सुपीरियर टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर उनको लगता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज सुपीरियर टू डेटा साइंस. ओके, बट ये एक मिथ है. ओके, ये एक्चुअली गलत है, मिसकॉन्सेप्शन है. ओके, सो इसके वजह से क्या होता है, एक गुड न्यूज इधर ये है, इसके वजह से क्या होता है कि इवन इन टॉप कॉलेजेस द सीट्स ऑफ AIDS, AIML, ओके, दे डोंट गेट फुल वेरी फास्ट. उनका कट ऑफ काफी कम होता है, काफी कम नहीं बट रिलेटिवली कम होता है. क्यों? क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि अरे ये स्ट्रीम्स इतने अच्छे नहीं हैं. So what you should do is, now listen to me very carefully. Okay, let's say you are getting computer engineering in not so good college. You are getting computer engineering not so good college, and you are getting data science in a good college. Tell me, what will you go for? So the obvious answer should be you'll go for data science in that good college. Okay, so basically, as far as these branches are concerned, they are same. As far as these branches are concerned, take a decision based on the college. If you are getting AIML or if you are getting blockchain technology in a good college, okay, take it in that particular good college. Now you may wonder how I am so sure about this. So please understand, we have been teaching engineering students since last 18-20 years. I myself teach engineering students till almost 5th sem and sometimes even after that. So I know precisely that the subjects in these streams of engineering are almost same. पहले जो 4 सेमेस्टर 5 सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो तो एग्जैक्टली सेम होते हैं. बाद के जो 2-3 सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स आएंगे उसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट वी डील विद डिग्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ऑफ मुंबई almoस्ट every day on a day-to-day basis. So we are aware of these things. So होता क्या है ना कि आप लोग ऐसे किसी की बातें सुनते हैं जिनको इसके बारे में डिटेल में पता नहीं होता है. So that other guy may tell you नहीं CS is better than IT, नहीं IT is better than this. Okay, so if somebody is telling you this thing, you should first try to understand what is the credibility of that person. Should you even listen to that particular person? Anyway, now which all colleges offer these streams? तो जहाँ तक कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात है, दे आर ऑफर्ड बाय ऑल कॉलेजेस इन मुंबई. ओके, एक दो को छोड़ के दे आर ऑफर्ड बाय ऑल कॉलेजेस इन मुंबई. एंड एज फार एज AIDS, AIML, these branches are concerned, so they are the new upcoming branches. So these are offered by not all but some colleges. But धीरे धीरे क्या होगा, now all the colleges will start offering these branches also. In fact, मुझे ऐसा लगता है, okay, this is now my opinion, it may not turn out to be true in the future. मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में AIDS का जो कट ऑफ है, it will become more than computer engineering and information technology because data science is the future. आज से 20-30 साल पहले लोग कहते थे कि oil is the new gold, oil is the new gold, okay, and आज लोग कहते हैं, do you know क्या कहते हैं? Can you take a guess? आज लोग कहते हैं कि डेटा इज द न्यू ऑयल.
या फिर डेटा इज द न्यू गोल्ड। ओके, सो क्या है ना, ये जितने भी कंपनीज होते हैं, जितने भी कंपनीज है, Amazon है, फ्लिपकार्ट है, फेसबुक है, गूगल है, दे यूज डेटा साइंस हेवीली। In fact, after 2 minutes, I'll explain you data science in great detail. But these companies, they exploit the concepts of data science to a very large extent. And that is why I believe that people who are good in data science, उनको काफी अच्छा job मिलेगा in the near future. Now, let's talk about artificial intelligence, machine learning, and data science in greater detail. Now, what is artificial intelligence? So it is that field of computer science in which we give human-like intelligence to machines. तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जो अच्छा बाय द वे, अभी जब मैं मशीन्स बोलूंगा तो मशीन्स का यहाँ मतलब होगा कंप्यूटर। ओके, सो व्हाट वी ट्राई टू डू इन एआई इज वी ट्राई टू गिव ह्यूमन-like इंटेलिजेंस टू मशीन्स, आफ्टर विच दे कैन डिसाइड लाइक ह्यूमन बीइंग्स डू। सो इसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो है सेल्फ ड्राइविंग कार्स, जिसके बारे में आपने सुना रहेगा। सो ऑफ लेट टेस्ला, गूगल, दे हैव बीन डूइंग एक्सटेंसिव रिसर्च इन दिस सेल्फ ड्राइविंग कार्स। अब कार्स नॉर्मली कौन चलाता है? वी ह्यूमन बीइंग्स। ओके, तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, हम कार चलाते हैं यूजिंग आवर इंटेलिजेंस, यूजिंग आवर इंटेलिजेंस, वी बेसिकली ड्राइव कार्स। बट व्हेन यू ट्राई to do the same thing in a self-driving car, that means what you are doing is you are empowering that car to take decisions like human beings. So that is basically AI, artificial intelligence. इसके बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे एक एग्जाम्पल है फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर और फेस रिकग्निशन फीचर। तो आजकल हमारे फोन्स में क्या होता है, अगर हमको हमारा फोन अनलॉक करना है तो वी जस्ट होल्ड इट इन फ्रंट ऑफ आवर फेस. So the phone will recognize our face and will unlock the phone. So that is another example of AI. अब AI का एक सबसेट है जिसको बोलते हैं ML, यानी मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग में हम वो सब एल्गोरिदम सीखते हैं, ओके, वो सब डेटा यूज करते हैं, जिसके कारण we give power to the machines to learn on their own. अब इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ, मशीन लर्निंग में हम क्या करते हैं, we basically train the machines to take decisions on their own in the near future without human intervention, without human interference. So basically कोई भी मशीन होगी, पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको बहुत सारा डेटा देंगे, ओके, उसको बोलेंगे देख ये सब डेटा है, इसको ऐसे ऐसे यूज करना है, ऑलराइट, उसको मशीन में बहुत सारे एल्गोरिदम्स फीड करेंगे, बट उसके बाद हम उसको इंडिपेंडेंटली छोड़ देंगे। फिर फ्यूचर में वो मशीन क्या करेगी, वो सब डेटा यूज करके, एल्गोरिदम्स यूज करके खुद से चीजों को लर्न करेगी, खुद से डिसीजंस लेगी विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम ह्यूमन बीइंग्स। सो दैट इज बेसिकली मशीन लर्निंग, एंड मशीन लर्निंग इज अ टूल, आई रिपीट, मशीन लर्निंग इज अ टूल टू अचीव AI, ओके, पुटिंग इट इन दैट वर्ड्स। अब डेटा साइंस क्या है? So data science is not exactly AI. Some part of AI is used in data science, but they are not exactly same. Data science, जैसे उसका नाम बोलता है, is the science of data. तो science of data से मतलब ये है कि data science में हम क्या करते हैं, हम data से meaningful information extract करते हैं, and that meaningful information is used for enhancing the business. अब इसका एक एग्जाम्पल, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आपको एग्जाम्पल्स पता भी है, बट आपको ये नहीं पता है कि वो डेटा साइंस है। तो इसका एक एग्जाम्पल जो आपको पता है वो है प्लेसमेंट ऑफ डिजिटल एड्स। आई रिपीट, प्लेसमेंट ऑफ डिजिटल एड्स। अब इसका क्या मतलब है? सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अभी आजकल वेकेशंस चल रहे हैं, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। समझो आपने डिसाइड किया आपको गोवा जाना है। अभी समझो आपको गोवा में एक पर्टिकुलर एरिया में रहना है, लेट्स से कलंगुट। सो आपने गूगल पे जाके टाइप किया बेस्ट होटल्स इन कलंगुट। अभी आप मुझे बताइए, समझो आपने गूगल पे टाइप किया बेस्ट होटल्स इन कलंगुट, दो चार मिनट आपने सर्फ किया, ठीक है, आई एम श्योर अब जो मैं बोलने वाला हूं आपको ये पता है। लेट्स से यू नाउ क्लोज गूगल एंड यू गो टू फेसबुक, यू स्पेंड सम टाइम ऑन द फेसबुक, देन लेट्स से यू स्पेंड सम टाइम ऑन इंस्टाग्राम। अब क्या आप बोल सकते हैं कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप क्या देखोगे? So on Facebook and Instagram, you will see ads जिसका हेडिंग ऐसे होगा,
बेस्ट होटल्स इन कलंगुट, नॉट इवन गोवा, कलंगुट, और फिर आपको कलंगुट के सारे होटल्स दिखाएगा। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ? सो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ डेटा साइंस। ओके, तो यहाँ गूगल ने क्या किया, आपने जब टाइप किया ना आपका क्वेरी, गूगल ने वो इंफॉर्मेशन लिया, ओके, और वो इंफॉर्मेशन इंस्टाग्राम, फेसबुक और सारे एप्स को बेच दिया। सो बेसिकली यू वर बीइंग सोल्ड टू दोज डिफरेंट एप्स, ओके, एंड दिस इज नथिंग बट डेटा साइंस। अब डेटा साइंस का एक और एग्जाम्पल है, ओके, शायद आप लोगों को पता होगा, एक बहुत ही फेमस ऐप है, वेबसाइट है, फर्स्ट क्राई विच इज फॉर किड्स। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। समझो किसी का 1 साल का बच्चा है और उसने फर्स्ट क्राई पे जाके ऐसे टाइप किया कि टॉयज फॉर 1 ईयर ओल्ड किड्स, टॉयज फॉर 1 ईयर ओल्ड किड्स, ठीक है। फिर वहां से उसने टॉय खरीदा, जो भी वो सब हो गया, ओके। अभी फर्स्ट क्राई क्या करेगा, ये इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए परमानेंटली अपने सर्वर में स्टोर कर देगा। तो उसे अब पता चल गया कि ये जो XYZ इंसान है, इसका एक साल का बच्चा है, एंड दैट बच्चा इज अ बॉय और अ गर्ल, व्हाटएवर, ठीक है। नाउ दैट एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन इज देयर विद फर्स्ट क्राई। अभी समझो जब वो बच्चा 4 साल का होता है, ओके, 4 साल का होता है, हाँ, अब फर्स्ट क्राई से एक नोटिफिकेशन आता है, फर्स्ट क्राई से एक नोटिफिकेशन आ सकता है उस आदमी को कि toys for 4-year-olds at sale on first cry. I repeat, toys for 4-year-olds on sale for first cry. तो अब फर्स्ट क्राई क्या करेगा, वो इस बात का ट्रैक रखेगा कि वो बच्चा 4 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, 10 साल का हो गया। पेरेंट्स भले ही भूल जाए, हो सकता है एट वन पॉइंट ऑफ टाइम पेरेंट्स को याद नहीं रहेगा कि बच्चा कितने साल का है, बट फर्स्ट क्राई को याद रहेगा, एंड इट विल कीप सेंडिंग मैसेजेस और नोटिफिकेशंस टू द पेरेंट्स कि भाई आपका बच्चा इतने साल का है, आपको ये खरीदना है क्या, वो खरीदना है क्या। सो दैट इज नथिंग बट डेटा साइंस। So that way there are scores and scores of examples of data science, okay, which we don't even know. So इसीलिए मैंने कुछ मिनट पहले बताया था कि डेटा is the new gold. जिसके पास डेटा है वो आज की दुनिया में पावरफुल है। Now let's talk about this branch, that is cybersecurity, Internet of Things and blockchain technology. तो ये ब्रांच में जो साइबर सिक्योरिटी है, आई एम श्योर यू आर अवेयर व्हाट इट इज। साइबर सिक्योरिटी मीन्स securing your systems, securing your websites when they are connected to the internet. तो होता क्या है, जब हम इंटरनेट पे होते हैं, ओके, our systems could be hacked, the hackers could extract important information from our computer system. तो उसको सिक्योर कैसे बनाना, ये एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर सीखता है। Now what is IoT? तो IoT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब IoT में क्या होता है, देयर आर सेवरल डिवाइसेस, ओके, पहले मैं डेफिनेशन बोल देता हूँ, फिर एक एग्जांपल लूंगा। देयर आर सेवरल डिवाइसेस which are connected to each other over the internet, and these devices have sensors in them using which they can analyze data, they can exchange data, okay। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। आपको शायद पता होगा कि these days there are companies which install IoT systems in our residence at our home। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। अब ये कंपनीज क्या करेंगे, हमारे घर पे एक पर्टिकुलर डिवाइस लगाएंगे, वो डिवाइस में सेंसर होगा और वो सेंसर कंटिन्यूसली मॉनिटर करेगा कि हमारे घर का टेम्परेचर क्या है, हमारे घर का टेम्परेचर क्या है, ठीक है। अभी ये जो सेंसर होगा, ओके, ये जो डिवाइस होगा जो मेरे घर पे इंस्टॉल्ड है, वो मेरे फोन से कनेक्टेड होगा। अब मेरे फोन में लोकेशन ऑन होगी, तो मेरे फोन को पता होगा कि मैं अभी घर के अंदर हूँ या घर के बाहर है, ठीक है। तो अभी एग्जांपल लेते हैं, एक डिवाइस घर के अंदर है जो टेम्परेचर का मॉनिटरिंग कर रहा है, टेम्परेचर का, एंड एक मेरा फोन है जिसके पास मेरी लोकेशन है, एंड समझो मैं घर के बाहर हूँ। अब ये दोनों डिवाइस आपस में ना इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो मेरा फोन इस डिवाइस को बोल रहा है कि अरे ये बंदा भी घर के अंदर नहीं है, बाहर है। फिर ये डिवाइस क्या करेगा, टेम्परेचर मॉनिटर कर रहा है, तो समझो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, 32-33 डिग्रीज, तो ये जो डिवाइस है वो मेरे फोन को बताएगा कि देख भाई, तेरा जो ओनर है, ओके, हमारा जो ओनर है वो शायद अभी घर के बाहर है, तो अगर वो घर के बाहर है तो तू उसको नोटिफिकेशन भेज। क्या नोटिफिकेशन, कि भाई घर में बहुत गर्मी है, ओके, एंड समझो वो ओनर घर के पास में ही है, 2 मिनट में वो घर पे पहुंचने वाला है, ओके। तो अब ये फोन क्या करेगा,
नोटिफिकेशन पॉपअप करेगा, अरे घर पे बहुत गर्मी है, एसी ऑन करना है क्या। ओके, तो अब ये जो मेरा फोन है वो एक तीसरे डिवाइस को डायरेक्शन देगा, और वो तीसरा डिवाइस क्या करेगा, मेरे एसी को ऑन करेगा। ओके, so basically these are the devices, they are interacting with each other, they are having sensors in them, and they are exchanging data based on which smart decisions are being taken. So this is one example of IoT, Internet of Things. Now what is that BCT, blockchain technology? Okay, so इसको समझाना थोड़ा difficult है in this particular video, but I'll still make an attempt. Now I hope you all know what is cryptocurrency. So Bitcoin, Ether, ADA, Dogecoin, these are examples of cryptocurrency. Okay, now let's talk about normal currency. Okay, traditional currency, यानी rupees, dollar, जो भी हुआ, ठीक है। अब let's say you have a bank account in State Bank of India, and उस बैंक अकाउंट में let's say आपके पास 10,000 rupees है, 10,000 rupees। तो होता क्या है, आपके पास जो 10,000 rupees है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, उसका इंफॉर्मेशन किसके पास होगा? उसका इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली आपके पास तो है, बट उसका इंफॉर्मेशन वो बैंक के सर्वर में स्टोर्ड होगा। ओके, सो बेसिकली द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाउ हैज एन अथॉरिटी ओवर दैट मनी। उसको पता है कि आपके वो 10,000 रुपए कहाँ स्टोर्ड है। Now let's take one hypothetical example. ऐसा होना बहुत मुश्किल है, but let's take an example कि somehow स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सर्वर से, SBI के सर्वर से वो इंफॉर्मेशन गायब हो जाता है। ओके, तो अगर वो इंफॉर्मेशन गायब हो जाता है, दैट मीन्स यू लूज दैट मनी परमानेंटली, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन भी गायब हो चुका है। ऑफ कोर्स उसका फिजिकल प्रूफ अगर आपके पास होगा तो उसके बाद यू कैन गो टू SBI, और फिर वो सब बात की बात है। बट बेसिकली हाइपोथेटिकली स्पीकिंग इधर क्या हो रहा है, देयर इज अ सेंट्रल अथॉरिटी, वन अथॉरिटी, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एंड सिर्फ उसी के पास इंफॉर्मेशन है कि आपका पैसा उसके पास पड़ा है। ओके, अब क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी वर्क्स ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आई रिपीट, क्रिप्टो करेंसी वर्क्स ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ओके, तो लेट्स से आपने एक बिटकॉइन खरीदा। वैसे एक बिटकॉइन खरीदना बहुत बड़ी बात है। ओके, इफ यू हैव अ बिटकॉइन यू आर रिच। ओके, बट लेट्स टेक एन एग्जांपल दैट यू हैव अ बिटकॉइन। ओके, अब आपके पास वो बिटकॉइन है, वो इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर्ड होगी? तो वो इंफॉर्मेशन ब्लॉकचेन पे स्टोर्ड होगी। ब्लॉकचेन, अब ब्लॉकचेन क्या है? सो ब्लॉकचेन इज बेसिकली अ प्रोग्राम व्हिच इज नॉट स्टोर्ड ऑन एनीबडी सेंट्रल सर्वर। यानी ऐसा नहीं है कि ब्लॉकचेन कोई बैंक के सर्वर पे स्टोर्ड होगा या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्वर पे स्टोर्ड होगा, नहीं। अगर आपने एक बिटकॉइन खरीदा है तो वो बिटकॉइन का इंफॉर्मेशन ना ब्लॉकचेन में आ जाएगा, एंड ये ब्लॉकचेन का कॉपी, आई रिपीट, ये ब्लॉकचेन का कॉपी हर उस कंप्यूटर में होगा जिसने बिटकॉइन खरीदा है। आई रिपीट, ये हर उस कंप्यूटर में होगा जिसने बिटकॉइन खरीदा है। ओके, सो इवन इफ द गवर्नमेंट वांट, समझो एक्चुअली शायद आपको पता होगा, द गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट, यूएस, इंडिया, दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद क्रिप्टो करेंसी, बिकॉज इसके वजह से क्या हो रहा है, जो अपना ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड ऑल, इट इज गेटिंग डिस्टर्ब्ड। ओके, तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो भी ये ना बिटकॉइन को, ईथर को बैन नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने बिटकॉइन खरीदा है तो उसका इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास नहीं है, और है तो भी ठीक है, बट उसका इंफॉर्मेशन ब्लॉकचेन में है। ब्लॉकचेन हर उस कंप्यूटर में है जिसने बिटकॉइन खरीदा है। तो कल को अगर गवर्नमेंट अनाउंस भी कर दे कि नहीं, आई हैव बैंड बिटकॉइन, ओके, तो भी उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, उसमें फिर भी ट्रेडिंग हो सकती है, पीपल कैन स्टिल बाय एंड सेल बिटकॉइन। नाउ हाउ ऑल दैट इज पॉसिबल, लेट्स नॉट गो इनटू दैट पर्टिकुलर थिंग, बट इफ यू टेक BCT, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो इस सब के बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे इन दैट पर्टिकुलर स्ट्रीम ऑफ इंजीनियरिंग। सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आर दीज फील्ड्स ऑफ इंजीनियरिंग। इसको बेसिकली बोलते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग के एलिड फील्ड्स, ALLIED, एलिड फील्ड्स। एंड वंस अगेन, no matter what field you choose from here, okay, they are equally same, they are equally good. Now let's talk about chemical engineering. So what exactly is chemical engineering?
So chemical engineering involves design and development of chemical processes that converts raw materials into useful products. So that is the definition over here. So basically इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर वो chemical process जहाँ कोई ना कोई raw material एक useful product में convert होता है, वहाँ एक chemical engineer की जरूरत पड़ती है. So it could be basically a pharmaceutical company where raw materials are converted into medicines, or it could be a company which is manufacturing plastic. It could be food processing industry जो तरह-तरह के food items बनाती है. It could be an oil refinery, or it could be a simple company manufacturing chemicals which are required in day-to-day life. So all these companies, all these industries where a certain process is required to convert raw materials into some products, into some consumable products. So those companies require chemical engineers, and these chemical engineers basically they design, they develop, and they supervise the processes which are involved in this particular manufacturing of products. Abhi, which colleges offer chemical engineering? So the best college, or the best, I will say, institute for chemical engineering is ICT, which is Institute of Chemical Technology. पहले इसका नाम था UDCT, University Department of Chemical Technology. So it is in Matunga, and it is obviously the best in entire India. After that, we have Thadomal, Tattamege, Bharatiya Vidyapeeth, MGM, which also offer chemical engineering. Now, of late, the demand for chemical engineering is not so much, and that is why many colleges have closed down their branches of chemical engineering. But still, if you are interested, you should aim for ICT. And once again, if you are doing chemical engineering, where you can find placements? So you can find placements in all these industries about which we spoke about just a minute earlier. So that was chemical engineering for you. Now, having understood all the streams of engineering, now let's understand some general information. Now, many students, many parents ask me that which is the best branch of engineering. So let me tell you one thing, the best branch of engineering depends on what you find interesting. So if the entire world is going for computer engineering, but if you find civil engineering more interesting, then you should definitely go for civil. Now, having said that, I believe I should also make you aware of the reality. My answers should not be diplomatic. My answers should not be politically correct. So in reality, as far as India and Mumbai is concerned, the branch of engineering which is in demand is computer engineering and its allied branches. So when I say allied branches, I mean IT, data science, machine learning, and so on. So what happens is that after your 4 years of engineering, or maybe after your masters, what happens is that if you end up doing computer engineering and similar branches. So now onwards, when I say computer engineering, I will also mean and similar branches. I'll not say that again and again. Okay, I repeat, whenever I say comms, okay, let me say this way, whenever I say comms, so when I say comms, I would mean computer engineering, IT, data science, machine learning, cybersecurity, everything, okay. So let me continue now. So what I was saying is that if you end up taking comms, then you get decent salary package, and the most important thing is you find placement in your own field, in your own branch. Now, very soon we'll have a look at the college placements, and over there also I will point out this detail to you. Now, one more thing which people ask me is this question. They ask me, should we do civil, mechanical, electrical, etc.? And then after 4 years, should we switch to software industry after graduation? So I come across many parents who tell me कि सर हमको किसी ने ऐसा एडवाइस दिया कि जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री होती है वो तो सिविल इंजीनियर्स को भी एम्प्लॉय करती है, मैकेनिकल को भी एम्प्लॉय करती है, तो आप एक काम करो, आप सिविल कर लो, मैकेनिकल कर लो और उसके बाद सॉफ्टवेयर में जाओ, तो आपको दो स्किल मिल जाएगा, सिविल का भी मिल जाएगा, सॉफ्टवेयर का भी मिल जाएगा. Well, anybody who says that, anybody who gives you this particular advice is actually not right. Now, why that person is not right and why you should not do this, I will also give you a genuine reason about it when we look at a college placement.
So very soon we are going to look at a college placement, and that time I am going to answer this question. Okay. So now एक काम करते हैं, हम देखते हैं VJTI and St. Francis are college placements. St. Francis is basically a college in Borivali. Okay. It is an average college, not very good and obviously not bad. Okay. And VJTI, okay, Veer Mata Jijabai Technical Institute. Okay, it is one of the best institutes for engineering in entire Mumbai. It is a government-aided college. Okay, the topmost in Mumbai. Okay. Now, why we are seeing data of VJTI and Francis, you'll come to know very soon. So, इसके लिए let's go online. So, देखो ये VJTI का website है. The one which will come in front of you. This is the website of VJTI. Okay. Alright, this is the website of VJTI. And this is the website of St. Francis College of Engineering. Alright. Now, हम VJTI के website पे जाते हैं. By the way, जब आप college की research करोगे, तो उस वक्त you should go to each and every website and you should just have a look at the placement data. So on the home page of the website, you'll come across something like this, TPO. TPO का full form होता है Training and Placement Office. Okay? या फिर सीधा placement लिखा होगा. So I click on this TPO. Then I click over here. Okay? And now this will open one more page. And let's say now we want to have a look at this data, the placement data of the year 2022 and 2023. All right. Now, what is it which I'm going to show you over here? So the first thing which I want to show you over here is average salary and highest salary. Okay. अब इसका क्या मतलब है? तो देखो, सुनो. First, try to understand this point. All right. Not many people understand this. होता क्या है ना कि if you get into engineering into a decent college, you will definitely find a placement after 4 years of engineering. Okay, जरूरी नहीं कि मिलेगा ही, but if you're taking comms, IT, वो सब branches में mostly आपको placement मिल जाएगा. But what many people don't understand is one thing, and that one thing is you will not find a placement with very good package unless and until you are very good. Okay, so if you don't have consistent 9 pointers, 10 pointers, okay, तो क्या होगा? वो भी शायद आपको जॉब मिल जाएगा. I repeat, अगर आपका 9-10 पॉइंटर नहीं है, आपका समझो 6-7 पॉइंटर्स है, तो भी आपको जॉब मिल जाएगा. But the package will be very less and not worth enough. Okay. Now this is something which not many people understand, and that is why we always tell our students that if you want to do engineering, you should pass your engineering with very good grades. होता क्या है ना कि this is something which we tell in all our seminars. Okay, if you have attended our offline online seminar on admission counseling, तो उधर भी हमने ये कहा था कि people believe, parents क्या होता है ना, parents अपने बच्चों को बोलते हैं कि 12th standard कर ले, JEE मेन दे दे, CET दे दे, उसके बाद लाइफ सेट है, उसके बाद कुछ पढ़ाई नहीं करना है. तो बच्चों को लगता है ठीक है, एक बार CET हो गया, now I am going to enjoy. Okay, so maybe students visualize those Karan Johar movies, okay, where just students just make fun in the college and all. But the reality is exactly opposite. You actually, what happens is once you get into engineering, your CET marks, your JEE main marks, your 12th standard marks don't matter. What matters are your marks in engineering. And unless and until you don't get very good marks in engineering, you will not land a good job. अब ये समझाने के लिए मैं आपको कुछ डेटा दिखाता हूँ. So let's take example of ये computer engineering का डेटा. तो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि 90 students were enrolled for placements. TPO का मतलब Training and Placement Office. वो 90 में से 83 students को placement मिल गया. 83 को placement मिल गया. By the way, this data is only up to 4th May 2023. So the placement is still going on. I'm sure VJTI में तो 100% placement हो जाएगा. Anyway, तो अभी तक 83 students को मिला. उसमें से कोई तो एक स्टूडेंट ऐसा था जिसको 44 लाख का पैकेज मिला है, 44 लाख पर एनम. बट ये डेटा पे मत जाइए. अभी आप इधर देखो कि जो एवरेज सैलरी है, ये देखो एवरेज, द एवरेज सैलरी इज 18 लाख पर एनम.
ओके अब 18 भी एक्चुअली ज्यादा है बिकॉज इट इज VJTI, दूसरे कॉलेज में तो इतना भी नहीं होता है, सो लेट्स वेट फॉर दैट। सो अभी इसको और अच्छे से समझने के लिए नीचे देखो, नीचे। So if you see over here, there's one more table which says highest packages offered in lakhs. Okay. Now over here it says there is some US based software company, okay, which is giving 62 lakhs. But ये देखो एक ही स्टूडेंट को लेके गई। Amazon, it is offering 44 lakhs, एक ही स्टूडेंट को लेके गई। Okay. Similarly, Morgan Stanley, it is offering 30 lakhs, 29.48 lakhs. It took only 13 students. So now, if you do the totaling of this is 1 plus 1, 2, 3, 4, 4 plus 13, 17, 17 plus 4, 21. Okay. So in VJTI, approximately 1,000 students are there. Okay. उन 1,000 students में से, okay, क्या हुआ है? खाली जो 20-30 students है, 20-30 students है, उनको ही ये एकदम हाई सैलरी जॉब मिला, हाई सैलरी, ऑलराइट। एंड बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं यानी लेट्स से एटलीस्ट 80 to 90% जो स्टूडेंट्स हैं, उनका जो सैलरी है देखो उसमें कितना फर्क है, 18। So the point I'm trying to make over here is that unless and until you are not very good, okay, you will not come in that upper bracket. And this is the situation with VJTI, जहां बॉम्बे का क्रीम जाता है। If you are in some average college, तो देखो सिचुएशन क्या होगा, इसलिए मैं अभी सेंट फ्रांसिस का डेटा ले रहा हूँ, which is an average college in Borivali. Okay, it's a good college, but still an average. Now, if you talk about Saint Francis, तो यहाँ का अगर तुम ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट देखोगे, ये देखो, ये क्लिक करते हैं, प्लेसमेंट्स फॉर 2022 बैच। Now, this is the placements for 2022 batch. Okay. So over here, if you just go through this data carefully, ये कंपनीज का नाम है जो प्लेसमेंट जिन्होंने किया है, ये वो पैकेज है उन्होंने ऑफर किया है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। अभी तो बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है, अगर तुम देखोगे तो TCS जो है, ओके, TCS जो है उसने 3.6 लाख पैकेज देके 95 स्टूडेंट्स को एम्प्लॉय किया है। ओके, विप्रो जो है, विप्रो उसने 3.5 लाख पैकेज देके 95 स्टूडेंट्स को प्लेस किया है, राइट। नाउ 95 प्लस 95 इज 190, तो अप्रोक्सीमेटली 200 हुआ। एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस ये देखो इज 413। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 400 में से जो अप्रोक्सीमेटली 200 स्टूडेंट्स हैं, 50% स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या पैकेज मिला है? उनको ये 3.5 3.6 का पैकेज मिला है। एंड ये पैकेज में भी सब वो टैक्स वैक्स कटेगा। तो ये जो 3 लाख का जो पैकेज है, that is hardly to calculate how much is it? Can you calculate? It is hardly 25,000 per month. Okay, so now just imagine doing 4 years of engineering and getting only 25,000 per month in your hand, or maybe even lesser than that. So colleges will tell you placement हुआ है, but this package is also important. But if you want to break out of this, if you want to break out of it, then you need to be very good no matter which college you are in. So whether you are in DJ Sangvi, Francis, whatever, if you are in that top 10%, तो होगा क्या? जो अच्छी कंपनीज है वहां आपका रिक्रूटमेंट होगा। For example, all right. Now over here, this is LTI, L&T Infotech. It is offering 8 lakhs. तो ये अभी तक ये कंपनी ने मैक्सिमम इधर ऑफर किया है, बट इसने देखो कितने स्टूडेंट्स को प्लेस किया है, 6 स्टूडेंट्स को सिर्फ। एंड ये हर जगह ऐसे ही होगा। जो कंपनी बहुत ज्यादा सैलरी देती है वो बहुत स्टूडेंट्स को एम्प्लॉय नहीं करेगी, वो हार्डली कुछ स्टूडेंट्स को एम्प्लॉय करेगी जिसका 9-10 पॉइंटर हुआ है, वो आर एक्सेप्शनली वेल इन कोडिंग एंड ऑल ऐसा। ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी वेल, that once you get into engineering, you still have to work very hard if you want to get into that top 10-20%. Otherwise, you will be in that remaining 70-80%, which is not worth it. Okay. Now, another thing which we want to understand is this thing. Now, we want to see branch-wise salary comparison also. और उससे थोड़ा ये क्वेश्चन का भी हमको थोड़ा आंसर मिलेगा। ऑलराइट, शुड वी डू सिविल, मैकेनिकल, वो सब, ठीक है। तो फिर से लेट्स हैव अ लुक एट VJTI का डेटा। ओके,
अब जब आप पीजीटीआई का डेटा देखोगे, इफ यू लुक एट पीजीटीआई डेटा, तो इधर सिविल इंजीनियरिंग में 80 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, अभी तक 59 को मिला है, ठीक है शायद सबको मिल जाएगा, बट उनका एवरेज देखो क्या है, एवरेज सैलरी 7 lakhs पर एनम। ओके, मैकेनिकल का देखो एवरेज क्या है, मैकेनिकल का 8 lakhs पर एनम। ओके, इलेक्ट्रिकल का कितना है, 10 lakhs पर एनम। एंड सबसे हाईएस्ट फिर कितना है इसका, कॉम्स का एंड आईटी। ऑलराइट, अभी ये जो इतना जो डिफरेंस है, ओके, ऑलमोस्ट हाफ, जो सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, इसका जो सैलरी पैकेज ऑलमोस्ट हाफ है। इसके दो रीजंस हो सकते हैं, या दो रीजंस होते हैं नॉर्मली। पहला रीजन ये होता है कि जो सिविल मैकेनिकल की जो कोर कंपनीज है, आई रिपीट कोर से मेरा मतलब है सिविल इंजीनियरिंग की कोर कंपनी कौन होगी, वो कंपनी जो कंस्ट्रक्शन का काम करती है, ऐसा। तो ये जो कोर कंपनीज की जो सैलरी है वो इतनी ज्यादा नहीं होती है, सो ऑटोमेटिकली ये एवरेज सैलरी कम हो जाएगी। बट इधर एक और रीजन है, ओके, वेरी सरप्राइजिंग, और वो रीजन ये है कि क्या होता है ना, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनके लिए भी सॉफ्टवेयर कंपनीज आती हैं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, इनके लिए भी सॉफ्टवेयर कंपनीज आती हैं। बट व्हाट हैपेंस इज दैट these software companies, when they employ people from civil, mechanical and all, they offer them very low salaries. Or in other words, what happens is companies with very high salaries, okay, or moderately high salaries, they generally tend to avoid sorry, I'll reframe my entire statement. Software companies which give moderately decent salary, ओके, और गुड सैलरी, सॉफ्टवेयर कंपनीज की बात कर रहा हूं, दे टेंड टू अवॉइड पीपल फ्रॉम नॉन कॉम्पिटिटिव ब्रांचेस। क्यों? क्योंकि इन लोग का जो कंप्यूटर का कोडिंग का जो स्किल्स रहता है वो इतना डेवलप नहीं होता है। ओके, तो होता क्या है कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इनको जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हायर करती है ना, ओके, ये वो सॉफ्टवेयर कंपनीज होती है जो लो सैलरी ऑफर करती है। जैसे एक है टीसीएस निंजा। So TCS Ninja is basically TCS only, Tata Consultancy Services, okay? Ninja उनका एक कैटेगरी का नाम है। तो Ninja is the base category जहां वो लोग सबसे कम सैलरी देते हैं। तो ये TCS Ninja में ये लोग क्या करेंगे, ये लोग पर्पसली ये सिविल, मैकेनिकल इनको लेंगे, कम सैलरी ऑफर करेंगे, उनको काम देंगे। अब ये कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझाने के लिए एक और चीज देखते हैं। सो लेट्स सी दिस सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ओके, एंड इसका प्लेसमेंट्स कहाँ गया, ये रहा, ओके, एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग इज कमिंग अप, प्लीज पे अटेंशन, एंड प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स बीटेक, and over here I go to 21-22, okay. Now over here if you see it says summary of campus placement for 21-22, okay, कोई कॉलेज में अभी तक 21-22 का ही डेटा डाला है, किसी कॉलेज ने 22-23 का भी डेटा डाल दिया है। अब यहाँ आई होप यू नो, जो अंधेरी में भवंस कैंपस है उसमें एक है सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिसमें सिर्फ 3 ब्रांचेस है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये गवर्नमेंट एडेड है। एंड उसी के साथ साथ एक और कॉलेज है सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें बाकी के ब्रांचेस है, कॉम्स है, डेटा साइंस है, वो सब, बट इट इज नॉट एडेड, अनएडेड, ठीक है। तो जो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वाला है ये एडेड है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग देखो, ओरेकल। अब सबसे पहली बात तो देखो ओरेकल क्या बोलता है पता है, उसका ये जो क्राइटेरिया है उसमें बोलता है नो बैकलॉग्स। तो इसका पता है मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है Oracle will employ only those students जिसका एक भी केटी कभी नहीं आया हो। यानी समझो अगर सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 में, फर्स्ट ईयर में आप कोई सब्जेक्ट में फेल हो गया, आपको केटी लग गया, बट आफ्टर दैट यू परफॉर्म वेरी वेल, स्टिल Oracle will not employ you. Anyway, let's move further. अभी जो 000 है ना, this is the number of students placed by Oracle. तो इसका मतलब Oracle did not place even one student in civil, mechanical, electrical. And देखो the salary it was offering was 8.5 lakhs per annum.
ठीक है, तो उसने एक भी स्टूडेंट को एम्प्लॉय नहीं किया। अब जाते हैं इधर प्लेसमेंट्स। लेट्स गो। Just a minute, guys. I'm sorry. So, so where were we? Okay, so this is the DJ Sangvi data. This is the data of current year. We need the data of last year. So, I think that's this. Yeah. Okay, so we saw the data of 2021-22 for SPC college. And हमने उधर क्या नोट किया था कि जो ओरेकल उधर था उसने सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल को बिल्कुल जॉब ऑफर नहीं किया। अब ये डीजे संघवी कॉलेज का डेटा है, तो यूर सी दिस इज द कंपनी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस्ड एंड सैलरी। अभी यहाँ देखते हैं, देखो यहाँ भी ओरेकल आया था। ओके, सी लुक हियर दिस वन। ओके, यहाँ आके उसने ऑफर किया था 8.3 lakhs, ऑलमोस्ट सेम। वहाँ 8.5 था, यहाँ 8.3। Now just look at the number of students it employed over here. See 21। अभी यहाँ उसने जो 21 स्टूडेंट्स एम्प्लॉय किया, आई एम प्रीटी श्योर मोस्टली इट विल बी फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ कॉम्स मतलब कॉम्प, आईटी, डेटा साइंस, वो सब। और उधर क्या हुआ, सिर्फ सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल थे, तो इट डिड नॉट एम्प्लॉय। Now over here, please understand one thing. Oracle actually does not have a problem with civil, electrical, mechanical. Okay. In fact, problem नहीं थी, इसलिए तो वो लोग उस कॉलेज में गए। उनको पहले से पता था कि वहाँ सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के हैं। So then the question is, अगर Oracle को प्रॉब्लम नहीं है, तो Oracle ने एम्प्लॉय क्यों नहीं किया? So can you just, I'll just wait for 5 seconds. Can you just think about it in your mind? तो ओरेकल ने एम्प्लॉय इसीलिए नहीं किया क्योंकि क्या होता है ना, देखो जो सिविल मैकेनिकल, आई मीन जो नॉन कॉम ब्रांचेस होते हैं, नॉन कॉम ब्रांचेस, ठीक है, उनका जो कोडिंग स्किल्स होता है, लॉजिक डेवलपमेंट होता है, वो इतना अच्छा नहीं होता है जो कॉम वालों का होता है। देयर आर मेनी सब्जेक्ट्स लाइक डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम एनालिसिस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कॉम आईटी वालों को अच्छे से आता है, बट इनको नॉन कॉम आईटी वालों को नहीं आता है। तो जो बाहर की दुनिया के लोग हैं जो आपको ये एडवाइस देते हैं, ओके, जो आपको ये वाली एडवाइस देते हैं, उन लोग क्या सोचते हैं, उन लोग सिर्फ इतना सोचते हैं कि हाँ, अगर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में लिया तो एक काम करना, कोई एक दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख लेना, जावा, पाइथन सीख लेना, एंड देन यू कैन इजीली गेट अ जॉब इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बिकॉज यू आर गुड इन सिविल, मैकेनिकल एंड सो। बट ऐसा नहीं होता है। अपार्ट फ्रॉम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसा बहुत कुछ होता है जो कॉम स्टूडेंट्स को आता है एंड बाकी को नहीं आता है। तो जब ओरेकल वहां गया होगा एसपीसी में, उसने ये देखा रहेगा कि अरे जो स्टूडेंट्स हैं इनको बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है वो नहीं आता है, एंड दैट्स व्हाई दे डिड नॉट एम्प्लॉय ओवर देयर। सो दैट इज व्हाई दिस थिंग इज अ कंप्लीट no. You should go to civil, mechanical, electrical, electronics and so on only if you are interested. Don't go with this frame of mind कि I'll go and then I'll switch. Okay, so I have shown you the data of this Oracle comparison also. Now let's move a little further. We spoke about this much. अभी बहुत लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं और ये क्वेश्चन ये होता है, they ask me should we go for sandwich branches? अभी सैंडविच ब्रांच क्या होता है, तो इट इज बेसिकली अ ब्रांच व्हिच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू अदर ब्रांचेस। जैसे एक ब्रांच है मैकेट्रॉनिक्स, MTRX बोलते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म। एक और ब्रांच है ECE, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो दिस इज ऑफर्ड बाय फादर एग्नल बैंड्रा, दिस इज ऑफर्ड बाय आई थिंक टेरना कॉलेज इन नेहरू। सो माय ओपिनियन दैट it's not wise to become jack of all trades and master of none. Okay, so it is better to avoid these sandwich branches. Okay, अगर आपको मैकेनिकल करना है तो आप मैकेनिकल में जाइए, इलेक्ट्रॉनिक्स करना है तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जाइए। So this is the combination of mechanical and electronics which I think you should avoid, and the same reason for this. Okay, so my opinion is that you avoid the sandwich branches. Now
always remember one thing, that the college is more important than the branch. Okay, so many students ask me a question, and that question is, should we compromise on branch or should we compromise on college? So what I'm trying to say over here is, let's say somebody wants to do computer engineering. Okay, let's say you want to do computer engineering, but you are getting civil engineering in VJTI. Okay, you want to do computers, but you are getting civil engineering in VJTI. So the question is, should you go for it? The answer is a complete no. Okay, you should never ever compromise on your branch. क्योंकि क्या होगा ना, if you compromise on your branch, 1-2 साल के बाद you will get frustrated because you will not enjoy the subjects which you will study in that particular branch, and because of that frustration you will not end up getting good marks. As a result of that, क्या होगा मैंने तुमको पहले ही बताया है. On the other hand, if you go to an average college, okay, but if you get a branch of your choice, then you can do exceptionally well over there, and you can apply for certain companies even from outside. So for example, let's say you got admitted in St. Francis. आप समझो St. Francis में Amazon नहीं आता है, ठीक है, कोई बात नहीं. अगर तुम्हारा कोडिंग स्किल्स अच्छा है, all right, if you're very good in comms IT and all, then you can even apply to Amazon from outside. ऐसा नहीं है कि वो बाहर वालों को लेते ही नहीं है. Okay, so if you are good in your particular field, you still have a very good chance of earning a very good package. Okay, so in my opinion, the branch is more important than college. Don't compromise on your branch of engineering. And finally, the question which many people ask me is how to select the college branch. So after having watched this much video, इतना वीडियो देख के, you must have figured out थोड़ा बहुत कि which branch of engineering you find more interesting. Now the only thing which you should do is, you should talk to people who work in that particular field. So for example, let's say you are interested in the world of software. So आपके बिल्डिंग में I'm sure बहुत से ऐसे लोग होंगे जो सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते होंगे. So you ask them the kind of work they do. You talk to them about a work environment. Okay, if possible, try to find out the salary. वैसे सैलरी तो तुमको इजीली दूसरी जगह से ही पता चल जाएगी, वेबसाइट से एंड ऑल. ओके, सो बेसिकली आस्क देम व्हाट इज द वर्क एनवायरनमेंट, व्हाट काइंड ऑफ जॉब दे डू, इज इट strenuous and all. So basically talk to people who work in that particular field and try to extract the information from there, and that way you should decide the college branch which you want to take. So I assume by now your CET exams are over. So in the next 15-20 days, what you should do is you should finalize your branch of engineering, and then you should not change that branch no matter what happens. Okay, so before your CET rounds, before your admission rounds start, you should lock the branch, you should finalize the branch. Okay, so I hope this particular video was helpful to you. Alright, if you have any queries, you can always get in touch with me on phone call or over WhatsApp. And I also hope that you have already attended our admission process seminar. If you haven't attended it, again do get in touch with me. Do consider us if you're looking for engineering coaching, because you will definitely need it once your college starts. In fact, it would be better if you join the vacation batches, because if you join the vacation batches, you will get a head start. Okay, what will happen is the next 2 months, I repeat, the next 2-3 months, you will be completely free. You will be doing no particular work over here, and the first semester of engineering will last only 3 months. So एक बार college start होगा, you will not get the time for studying, and this will effectively play a very big role on your semester 1 results. So join vacation batches, if not our classes, anywhere else, but join vacation batches and get a head start over others. Okay, so that's it from my side. I'm Professor Sandeep Gupta signing off. Thank you, take care, and good luck.